everyone. I am Supriya Patel. I have done pharmaceuticals chemistry. I am working in TIT College of Pharmacy. Today we are discuss about dental products. Today's topic dental products. What is dental product? Dental products are cleaning. Dental products are help in cleaning of inner teeth. For examples, toothpaste, toothbrush, mouth freshener, mouthwash. This is the dental products. How many types of dental products? What is a tooth of anatomy? Tooth anatomy. First, enamel, dentin, pulp cavity, gum, root canal, bone, cement, nerve, blood vessels. This is the types of tooth of anatomy. What is anatomy of tooth? The tooth consists of three layers classified of tooth. First, enamel, cementum, and pulp. What is the enamel? It is the most hardest part in a body. This is a 98% mineral in a body. It is a very 98% mineral and a very dense. Second, cementum. Cementum are layer covering portion, tooth lining, word and gum. Then third, dentin. Dentin, which is a surrounding pulp cavity and extra throughout entire portion tooth. It is considered 75 mineral, also harded and dentines. What is the problems of a tooth? Problem related of a tooth. First, bad breath, oral cavities, gum problem, oral cancer, tooth sensitivity, tooth erosion, tooth ashes and unattractive smell. बैड ब्रीथ हो सकती है, टूथ कैविटीज हो सकती हैं, गम में प्रॉब्लम आ सकती है, ओरली कैंसर हो सकते हैं, टूथ सेंसिटिविटी हो सकती है, टूथ एरोशन हो सकती है, टूथ में कट हो सकते हैं, टूथ में ब्लीडिंग हो सकती है और अनअट्रैक्टिव स्मेल हो सकती है. दिस इज अ टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम रिलेटेड ऑफ अ टूथ. This is a dental product. Dental products are three many classifiers of dental products. First, anti-caries agent. Second, dentifrice agent. Third, है desensitizing agents. First है anti-caries agent. What is the anti-caries agent? Anti-caries agent ऐसे agents होते हैं जो कि caries के against काम करते हैं. उसको बोलेंगे हम dental products of anti-caries agents. First, these are agents which help prevent of dental decay. For example, sodium fluoride, essential fluoride, sodium monofluorophosphates. And then dental caries are tooth decay or cavities. And next, it is caused by parasitic types of bacteria. Produce acid destroyed tooth के enamel and layer under its dentist. कुछ कैरीज हमारे टीथ में ऐसी कैरीज प्रेजेंट होती हैं जो कि हमारे फूड से आती है. फूड में क्या प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं जो कि क्या होते हैं, कुछ मटेरियल्स फूड वो क्या होता है हमारे टीथ में अवेलेबल होता है जो कि कैरीज को रिड्यूस करने में हेल्प करते हैं, एंटी कैरीज एजेंट्स. And now it is probable causes of caries cavity associate of diet. Pupils consume high carbohydrate. Next, brushing of tooth prevent loading food particles over tooth surface, help keep of hygiene. The ammoniated toothpaste are utilize lactic acid and also discrete count. It is commonly used to prevent caries. May be used systemic and non-systemic topically. It is organic compound. They are used of cavity filling. Next, tooth decay attribute action lactic acid building by plaque and tooth surface. Next, the mechanism which fluoride inhibit caries formation due decrease acid solubility, enamel, bacteria and elevation. Fluoride help of dental products. They are major role of dental products. Role of fluorides. Small quantity fluoride necessary prevent dental caries. Next, fluoride anti-caries replace hydroxyapathic in outer surface of the enamel.
Next, fluoride inhibition, demineralize, promote, demineralize. They are help of mineralize and demineralize. Fluoride drinking water, fluoride containing product like toothpaste, tooth mouse, working through these of manganese. Now, there are many types of compound of dental products. First compound, sodium fluoride. Sodium fluoride, it is organic chemical widely used fluoride in dental product preparation. It is protect the teeth from acid demineralized during bacteria growth. Next, it is provide strength tooth enamel, prevent tooth decay. Next, minor quantity of sodium fluoride, it is used of drinking water. They are already marketed and available sodium fluoride 5000 ppm. Dental products properties, it is a white powder, it is a colorless and odorless, it is soluble in water, it is insoluble in alcohol. Their molecular weight is 41.99. They are also available sodium fluoride 5000 ppm. They are also available Colgate Duropathic 28,000 ppm. Dental product preparation. How much dental products of preparation? Sodium fluoride. It may be prepared neutralization हाइड्रोफ्लोरिक एसिड विद सोडियम कार्बोनेट. सबसे पहले हाइड्रोफ्लोरिक एसिड रिएक्ट करेगा सोडियम कार्बोनेट के साथ. हाइड्रोफ्लोरिक एसिड सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा तो सोडियम क्लोराइड फॉर्म करेगा और H2O प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी. इसी की सेकंड मेथड से प्रिपेयर करते हैं. इट इज प्रिपेयर बाय डबल डिकम्पोजिशन कैल्शियम फ्लोराइड विद सोडियम कार्बोनेट. कैल्शियम फ्लोराइड के साथ सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट करेगा तो सोडियम फ्लोराइड प्लस कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन होगा. नेक्स्ट आते हैं यूजेस. व्हाट इज यूजेस ऑफ सोडियम फ्लोराइड्स? Sodium fluoride make teeth more resistant decay and bacteria that causes cavity. The medicine also used to prevent cavities. Next, sodium fluoride bacteria property, but is too toxic use of bound and antiseptics. The monosodium salt, sodium fluoride, luteum acid used in treatment of damaged disease of effect. Brain associated with liver disease. And next, sodium fluoride is used as antisepticide. They are also uses of dental products. Next आते हैं 3 steps of dental product. Classify of dental products. First है anti-caries agent, second है desensitizing agent, third है anti-dentifrices. फर्स्ट डेंटिफ्राइसिस एजेंट ऐसे एजेंट होते हैं जो कि हम टूथपेस्ट के थ्रू उसको यूज करते हैं. फॉर एग्जांपल डेंटिफ्राइसिस सब्सटेंस यूज्ड टूथब्रश पर्पस क्लीनिंग सरफेस ऑफ अ टूथ. फॉर एग्जांपल कैल्शियम कार्बोनेट, डाइकैल्शियम फॉस्फेट, सोडियम मेटाफॉस्फेट, कैल्शियम पायरोफॉस्फेट, एक्सेट्रा. This is example for dentifrices. Next, dentifrices consist against cleaning tooth surface and polishing effects. Next, these agents are abrasive in nature. This is responsible physical removing plaque and debris. These are applied of powder or paste. Next compound है calcium carbonate. Calcium carbonate, it is the most abundant widely distributed calcium carbonate. Next, acute chalk, marble slide, coal, peel, and limestone. They are also used of calcium carbonate. Medicinally, it is used of antacid and calcium supplements. It is used of filling and cosmetics. And it is added of swimming pool and desensitizing agent of pH current. They are also available in marketing calcium carbonate pure powders.
Then property is it is colorless crystalline powder, कलरलेस होता है, कुछ क्रिस्टल्स फॉर्म में इसका पाउडर अवेलेबल होता है. इट इज़ ऑर्डरलेस एंड टेस्ट, इट इज़ ऑर्डरलेस एंड वाइट सॉल्टी टेस्ट होता है. इट इज़ readily soluble water or insoluble alcohol. And next, pharmaceutical preparation, tablet, solution and drop toothpaste. Preparation. How much of preparation? It is prepared precipitate by mixing boiling solution, calcium chloride, sodium carbonate, allowing precipitation of a cool. कैल्शियम कार्बोनेट को रिएक्ट करेंगे सोडियम कार्बोनेट के साथ. कैल्शियम क्लोराइड को सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट होगा तो सोडियम क्लोराइड फॉर्म होगा और कैल्शियम कार्बोनेटेड प्रेसिपिटेट होगा. नेक्स्ट प्रोसेस है, इट इज प्रिपेयर्ड बाय रिएक्शन कैल्शियम ऑक्साइड एंड वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड. It is used as dentifrices. Next, it is used of dental cleaning, polishing agent. It is used medicinal industry, manufacturing, antacid, tablet, which made base material, etc. It is used of calcium supplementary. It is used of manufacturing, paint, paper, plastics. ये dentifrices में यूज होते हैं. क्लीनिंग पॉलिशिंग एजेंट में भी इनका यूज किया जाता है. एंटासिड में, कैल्शियम सप्लीमेंट्री में इसका यूजेस होते हैं. इट इज यूज मैन्युफैक्चरिंग, पेंट, पेपर एंड प्लास्टिक एक्सेट्रा. डिसेंटिजिंग एजेंट. These agent use dental preparation. Agent are used dental preparation, reduce sensitivity, teeth, हॉट एंड कोल्ड. ये ऐसे एजेंट होते हैं जो कि हमारे दांतों में सेंसिटिविटी हो जाती है, हीट कोल्ड की वजह से सेंसिटिविटी हो जाती है, उनमें हेल्प करते हैं. ये होते हैं डिसेंटिजिंग एजेंट्स. They are used as local anesthetic. For example, zinc oxide, zinc chloride and strontium chlorides. Zinc oxide. It is considered of best cementing material dental practice. It is material created by combination of zinc oxide and usinol. It is used as temporary cement filling in events the patient will return later date of semi-permanent. It is also used of teeth filling and teeth and filling यूजिनॉल और सीमेंट. यूजिनॉल सीमेंट को दो तरीके से तैयार किया जाता है, एक लिक्विड फॉर्म में और डोजेस फॉर्म में. इनके जो जिंक ऑक्साइड के कैल्शियम कार्बोनेट को यूज़ किया जाएगा और लिक्विड फॉर्म में, और इसका सॉलिड फॉर्म में होगा जिंक यूजिनॉल ऑयल. दोनों को मिक्सअप करके जिंक यूजिनॉल सीमेंट तैयार किया जाता है जो कि हमारे टीथ में फिलिंग का काम करता है. दिस इज अ जिंक ऑक्साइड. थैंक यू.